तो भाई ये बकलावा है, टर्किश बकलावा, जिसको खाने के लिए अंग्रेज़ भी यहाँ आते हैं, इतना मशहूर है। तो Very delicious. And maybe eating with ice cream, very delicious. वेरी तो In Turkish, dessert with ice cream. वेरी इंटरेस्टिंग। तो सड़क के उस पर एशियन इस्तांबुल है और ये जो यूरोप सड़क इस पर ये है यूरोपियन यूरोप इस्तांबुल। yes. हाउ डिड यू ओपन दिस कार लाइक Technology. विद योर फोन? Yes, with phone. भाई पता नहीं कैसे, चाबी है नहीं, गाड़ी लगी हुई थी, फ़ोन से खोल ली। भाई रात के 2 बजे हैं और 2 बजे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ये एरिया। तो हमारे साथ हमें कंपनी देने के लिए हर तरफ पुलिस वाले हैं कि Palestine. Palestine, okay, my friend, very nice to meet you. India is a good country. Yeah. It's a very most and very beautiful country. Indian food. रात के 12 बज चुके हैं और मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकल आया हूँ। कारण उसका ये है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी ना, बोस्निया वाली, montenegro से बोस्निया जा रहा था, तो मुझे एक लड़का मिला था रास्ते में, उसका नाम है इब्राहिम। वो टर्की में इस्तांबुल का रहने वाला है और उसका मुझे अभी मैसेज आया, कॉल आया कि भाई आप यहाँ इस्तांबुल में आए हो, तो चलो मिले। तो रात के 12 बज चुके, उसने मुझे कॉल किया और यहाँ मॉस्क के सामने कहीं खड़े होने के लिए कहा है और मिलने जा रहा हूँ उससे। तो भाई ये है वो रेस्टोरेंट सिमे सराय, जहाँ उसने मुझे आने के लिए बोला है अभी। दिक्कत ये है कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो उसको मैंने बोल दिया था कि भाई इंटरनेट नहीं है, मैं सीधा रेस्टोरेंट में पहुँच जाऊँगा। वेट करते करते हॉस्टल के 2 लड़के मिले हैं। Hussam. Hussein. Palestine. From Turkey. Palestine. Palestine. Okay, my friend. Very nice to meet you. Palestine. This Guinea. I'm from Guinea. Shonya. Hassan, Guinea. Oh, Guinea. From West Africa. West Africa, yeah. Beautiful country. Yeah. I want to visit Palestine. I want to visit Guinea, Africa. Definitely next time. Sure. Bye. I asked there and they told me to wait here. Opposite Simsara. Okay, let's You go. know? Okay. Now open? Yeah, it's open. Hi everyone. Everyone. Meeting together. Meeting again. We Very good. last met in Bosnia. Yes. Montenegro to Bosnia by bus. And now together in Istanbul and taxi start Istanbul tour. Okay? Yeah. But it's beautiful. Yes. Beautiful. Istanbul is very beautiful. You are very lucky to be in this place. 2 hours ago, walking this street. Oh, really? Yes. Go home, but I look your history. I say I need Istanbul. Okay, I call to you. Yeah. So what do you work? What do you work in? Space science. Space science. Yes. What I am do a you do? teacher. Teacher. Yes, I am a teacher in Şişli. Very near in Taksim. Okay. Coming back. Oh yeah. Coming back from work. अभी काम से आ रहे हैं भाई. But every time travel. I am traveling Yeah. Istanbul. Which countries you travel? Turkey, Bosnia, Montenegro, Israel. Israel. Yes, Israel. Okay. And I want to go to Kıbrıs. Kıbrıs. Batumi, Balkan country, all of. So do one thing. What? Come to India. India. Why Come to not? India. I mean, come to New Delhi. Okay, And, I promise you, you invite me, I will come. Okay. Sure. I want American. Do you know American? All of people American. Okay, American good for me because every time watch American films. Okay. He's a good actor. Yeah, very good actor. Yes. I'll take you to Taj Mahal. Taj Mahal. Why? Every time I want. यही फायदा होता है locals के साथ घूमने का. तो I am saying that since you are local, so you know about this city than any other person, and that's the advantage of exploring this city with someone who lives here. I don't understand you. Okay. Could you repeat that every time Yeah. people Yeah. generally make boom Yeah. in terrorist attack, boom in Istiklal Street because every time crowd. Oh, really? Yes, every बस time. कहते हैं अगर कोई हमला होता है ना तो सबसे पहले इसी सीट पर होता है क्योंकि रश से भरी होती है टूरिस्ट से. French architect. French French architecture, yeah. architect. 1970. Big fire in this area. Big fire? Big fire. Okay. Everywhere fire.
Fire. Okay. And after that coming Francis architect, everywhere make a new building. न्यू बिल्डिंग. Yes. ओके. तो अभी 1970 में यहाँ बहुत बड़ी आग लग गई थी, तो उसके बाद जो आर्किटेक्चर बना वो फ्रेंच आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए सारा ये नई नई बिल्डिंग्स उसके बाद दोबारा बनी है. यू वांट टू ईट डोनर? I am full for you. I am full. Okay. तो कहते चलो आपको टर्किश डोनर खिलाता हूँ. डोनर तो होता नॉन वेज है ना, तो इसलिए मैंने कहा नहीं भाई. Turkish थैंक यू सो people मच. eat bread and meat. Yeah. Bread and meat and onions. This I saw where this area. Varna Cafe very famous because and one teacher, mathematics teacher, travel words and everywhere take anything. For example, glass. For example, anything, and make cafe. Look everywhere very important for me. This is circle and good place coming with me. Okay. Alright, come. This is Varna Gezgini Cafe. Okay. Ben çalışmıyorum yani. Harika bir şey. Gerçekten mi? Evet. Thank you. Aynen, tamam. 5 dakika bu ortam çok sakin. Wow. This area, every country follow, okay? It's beautiful. Oh, these are glasses. Plus every country coming glass. Every country coming glass. Okay. Wow. Come. That's amazing. Country money. Yeah. Very lot because we travel. Yeah. And this area good place. Okay. ये नंबर प्लेट्स हैं सारी यहाँ. हर देश की है कहते लगाई हुई है. Every country, every city. हर देश की यहाँ नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं. That's amazing place. Ibrahim, you brought me here. Otherwise, I would have never come here. Street and city name, country name. Okay. For example, Iran. Oh. Mathematics teacher give up work and travel work. And every country take anything and make cafe. तो भाई उस रेस्टोरेंट के अंदर ना दुनिया के हर देश के बीच में से चीज़ें लाकर यहाँ रखी गई हैं. अगर वो नंबर प्लेट है तो दुनिया के हर देश की नंबर प्लेट पड़ी हुई है, हर देश की करेंसी पड़ी हुई है, हर देश से एक कॉफ़ी कप लाकर रखा हुआ है. ठीक है. जो टीचर है यहाँ के, द नेम ऑफ द टीचर वरुणा गेज़गिना. तो उन्होंने Gezgin is travel man. Gezgin travel. Yes. Gezgin is travel man. Travel man. Wow. वो कितना बढ़िया नाम है. Travel. So he traveled everywhere and Travel everywhere. Very good song. Very good song. Yes. Love song. Love song. Turkish love song. Okay. Turkish love song. Okay. तो भाई ये गलाता टावर आ गया है ये. 200 gram 200 lira. And what is this in English? Kestane. Try this. Benim araba girer mi oraya? Girmez ki senin araba. Başının terimini söyleyeceğim. अखरोट को उबाल के उसके ऊपर चीज़ लगा के रखा हो. What is this? In India we say छल्ली. छल्ली. And mısır. Hi everyone, this is Galata Bridge, very historical, very important for Istanbul. In this area, this center one. Istanbul, center Okay. is Istanbul. Marmara Sea, Marmara Sea. Marmara Sea, yeah, Marmara Sea, yeah. Marmara. Yeah. See? In this area, center Istanbul. Okay. Center Istanbul. Center Okay. Istanbul. Okay. Every time good place, every time cheap fish, every time crowded, at good area. Today is rainy, but no rainy, very good place. This is a Haliç Metro straight. Haliç Metro street. Haliç Metro. You Taksim, start Uh-huh. Taksim, Uh-huh. after 2 station, Haliç Metro up, very beautiful. Okay. In yellow color, fire color. Fire cooler. Yes. Now is Istanbul University tower. Okay. तो पहले ये फायर टावर था ऑटोमन एम्पायर में, और अब ये इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का टावर बन चुका है ये. Fishing, So fishing. fishing people fishing. Yeah. Asian, this is now Europe. Oh, okay. Yes. Is opposite Asian. Okay, Now that's is Europe. Asian Istanbul. Yes. And Asian this Istanbul is Europe Istanbul. And this is Europe Istanbul. This is Europe Istanbul. Okay. Opposite Asian Istanbul. Okay, so this And is this Europe middle Istanbul. Tower. You look middle tower. Yes. Look opposite you. Middle. Middle tower. Girl tower. Okay. And Üsküdar Asian.
but near Europe town. Europe place. ओके वेरी इंटरेस्टिंग। तो सड़क के उस पर एशियन इस्तांबुल है और ये जो Europe सड़क इस पर ये है यूरोपियन इस्तांबुल। Yes. This is Topkapı place, in Ottoman place. वाओ Have you ever been Hagia Sophia? नो Okay, now we been. I say, today night very large, very big. No finish. रात को जगाएगा। Two morning travel. Because I love travel. We love travel. Okay. No girlfriend, no wife. I am free. We are free. Okay. ओके Let's वेरी go गुड Hagia Sophia. Let's go Hagia Sophia. या लेट्स गो इस्तांबुल जो है ना दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी बोलते हैं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब आधा हिस्सा अलग रीजन में पड़ता है, शहर का आधा हिस्सा अलग रीजन में है। मतलब ये वाला हिस्सा यूरोप में है और वो वाला हिस्सा एशिया में है। अच्छा लगा यार, वो जानते हैं। Now is Istanbul University Tower. ओके In Istanbul University. And you? I graduated in Istanbul University. If you upstairs in this tower, every Istanbul, look, every Istanbul saw. ओके तो मतलब आप इसके ऊपर तक भी जा सकते हो। Look tower. या If your weather is closed and green, if your weather is open, red. Ya çek kendini çek. Yeah. Sen çekeyim. You want this? I don't know how to use it. Okay, only keep. Burada hepsi yalandan. Abi böyle bunu tut. Yalandan tutsun değil mi abi? Yalandan tutsun. Artı keep fishing. How is Arti? Okay. know how to use it. Okay, good. Böyle fotoğraf. Okay. Okay. That's yes. Thank you. This is Galata Bridge. This is Marmara Sea. This is Boğaziçi Bridge, Ottoman Bridge. Ottoman And Bridge. Opposite Asian, opposite Europe. Or ओके this opposite Asian, this side Europe. तो भाई ये ओल्ड बाज़ार है और ये रात को इसलिए खुला हुआ है क्योंकि पुलिस वाले नहीं आते थे रात को तंग करने के लिए, और ये लगता ही रात को है। इसकी शुरुआत होती है रात को 8 बजे से और इनकी जो कुछ दुकानें शुरू रह गई हैं, मतलब अभी 1 बज चुका है तो 8 से 12 चलता है ये, और अभी भी कुछ लोगों ने बाहर ऐसे ही टांग के रखी हुई हैं चीज़ें। Drink water, no problem. Okay. In sweet water. Very delicious Turkish baklava and तो भाई ये बकलावा है, टर्किश बकलावा, जिसको खाने के लिए अंग्रेज़ भी यहाँ आते हैं, इतना मशहूर है। very delicious. And maybe eating with ice cream, very delicious. तो In Turkish, dessert with ice cream. ओके तो टर्की में जो मीठा है ना वो हमेशा आइसक्रीम के साथ खाते हैं। सो यू वांट टू ट्राई फर्स्ट? यू वांट टू ट्राई? Okay. तो हमारे इंडिया में जो बालूशाही होती है ना, टेस्ट बिल्कुल वैसा है, बहुत बढ़िया है, एकदम स्वीट है, मीठा है। मुझे बिल्कुल पहला इम्प्रेशन आया ना खाने पर, वो आया था जैसे हम बालूशाही खा रहे हैं, और साथ में दिस इज टर्किश चाय, टर्किश टी एंड दिस इज डेट टर्किश, मतलब चाय, टर्किश चाय, साथ में ये डेट है। तो भाई रात के बज चुके हैं 2 और ये है इस्तांबुल का सिटी सेंटर। हम जहाँ बैठे थे ना वो रेस्टोरेंट था, और यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी रात खुले रहते हैं, खासकर जो सिर्फ सिटी सेंटर के हैं, बाकी नहीं, बाकी तो बंद हो जाते हैं। तो भाई ये घूमते घूमते हम आ गए सिटी सेंटर पे। ये अल सोफिया मॉस्क है और ये एकदम इसके ऑपोजिट है ब्लू मॉस्क। आपने नाम बहुत सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना था ब्लू मॉस्क। इट लुक्स लाइक रेड। भाई रात के 2 बजे हैं और 2 बजे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ये एरिया। तो हमारे साथ हमें कंपनी देने के लिए हर तरफ पुलिस वाले हैं। ये देखो ये 2 यहाँ जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये लगी कि किसी ने कोई रोका नहीं, कोई टोका नहीं, कोई मतलब होता है ना कि रात को 2-2:30 बजे कौन अनजाने में भाई चलता आ रहा जा रहा है यहाँ। तो रास्ते में कोई पुलिस वाले मिले, किसी को कोई लेना देना नहीं भाई। This is blue mask. हाँ Opposite Hagia Sophia mosque. अल सोफिया मॉस्क। For example, Ramazan. You know Ramazan? या In Muslim, a very special month. Every Muslim in this area in sitting, eat meat, in sahur, in iftar. हाँ Yes.
This area very good in between Blue Mosque and Hagia Sophia. All of the people in, for example, Ramazan and eating meat, eating food in dinner in Safur in Ramazan. Tomorrow coming specifically tourists. Do you know Turkish hammam? Yeah, Yes, yeah, it yeah. is very old Turkish hammam and very expensive because very specific or historical and Hürrem Sultan Turkish hammam. So Turkish hammam is people take bath inside. Bath, yes, Turkish bath. Turkish bath. वो Turkish bath जो हमने था ना सुना वो बड़ा मतलब मशहूर है भाई. Do you want to go Istanbul University? Okay, as you want. Really? It's there. No, this area. Far. Far. Go back. Go back. Yeah. Yeah, I'm a bit worried. If you get a shoes, then it's a different thing. We can go. भाई इनका ना पैर ये पूरा जूता जो है ना लेदर I travel for day, no sleeping, no resting, no तो 4 दिन resting, से भाई सब घूम only रहे हैं. walking is my foot is problem तो now. इनका ना जो लेदर का Very शूज है pain, ना very तो pain. एकदम वो पैरों में जकड़ चुका But है. don't stop, but continue. तो मैं इनको क्या भाई कमाल की लग रही है यार ये ब्लू मास्क. मतलब कितना बढ़िया है यार. रंग इसका अजीब तरह का आ रहा है. मैं द कलर्स इसको जिस भी एंगल से देखो ना इतनी बढ़िया लगती जा रही है यार. क्या मतलब क्या बताऊँ इसकी खूबसूरती. पहले उधर खड़े थे और अब इधर से आके देख रहे हैं. कमाल. India. Oh. Yeah. I live in Istanbul. He is a tourist. New Delhi. Have you been to India? Don't even know. Yes. India? Yeah, Ukraine. 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 Okay. Kiev. Kiev. Beautiful. I In our country is war. Yeah, I know. Yeah, It's yeah, pretty yeah. much tough. But we victory on the other side. Yeah. Have you been to India? Yes. No. Sri Lanka. I know. But India is beautiful. Yes, You yeah, come we to know, India. we You know. like it. India is a good country. Yeah. It's a very most and very beautiful country. Indian food, very good. Food, Indian food in our country is delicatessen. Yeah. Delicatessen. Very good. Yeah, it Delicatessen. is, In it our is. country, It is. Indian food is very best. Yeah, Very it is. best. It is. Okay, good Okay. night. Thank you. Good night Bye. for you. Welcome in Kiev. Thank you. Sure, I will come. I'll Ukraine. definitely come. One day I'll come. Thank you. Bye. तो भाई यूक्रेन से थे ये कीव से और जंग चल रही है. बेचारे खुद ही कह रहे थे भाई हाल बुरा है. झूठे मुंह भी नहीं कह सकते कि कीव आओ. तो हाँ मतलब ऐसे. How did you open this car like Technology. with your phone? Yes, which one? भाई पता नहीं कैसे. चाबी है नहीं. गाड़ी लगी हुई थी फोन से खोल ली. Hi everyone, traveling car. And go to hotel. गाड़ी पे करके हम अपने हॉस्टल ही आ चुके हैं. एक्चुअली क्या हुआ कि इब्राहिम कह रहा है कि काफ़ी रात हो चुकी है. यहाँ से अभी अपने घर जाएगा. यहाँ से घर वैसे तो आधे घंटे 15-20 मिनट में पहुँच जाएगा. लेकिन कहता है अगर हॉस्टल में खाली जगह है तो ये हॉस्टल में रह लेगा. सो इफ़ यू लाइक द हॉस्टल देन यू कैन स्लीप हियर. भाई इसके पास ना पता नहीं क्या औजार है. टेक्नोलॉजी है ऐसी कि इसके पास चाबी नहीं है गाड़ी की. लेकिन अपने फ़ोन से सब कुछ लॉक कर लेता है. फ़ोन से अनलॉक कर देता है. फ़ोटो ली जा रही है चारों तरफ से. अगर कुछ हो गया तो सिक्योरिटी तो रहेगी ना कि गाड़ी की फ़ोटो खींची थी यहीं खड़ी थी. अगर उठ गई वैसे तो क्या होगा.